देखो भारतर प्रधान विचारपति जी अच्छा संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठतम विचारपति जस्टिस बी.आर. गभाई को उत्तराधिकारी भाव सुपारिश कर कारण कार्यकाल सरुची वर्तमान जस्टिस गभाई उत्तराधिकारी हेबे अर्थात भारतर परवर्ती सीजेआई हेबे जस्टिस गभाई अनेक सांविधानिक कोर्ट रे अनेक वर्तमान जो रही न्यायिक व्यवस्था से सामिल होती एक्सपीरियंस रही किंतु परवर्ती समय से सीजेआई हेबे से जो प्रक्रिया रही से प्रक्रिया अनुसार जी जस्टिस अच्छी खाना से उत्तराधिकारी भावे ना सुपारिश कर सारी गुरुत्वपूर्ण सूचना बी.आर. गभाई को उत्तराधिकारी भाव में सुपारिश कलापर जो प्रक्रिया रही से प्रक्रिया अनुसार से परवर्ती मे 14 तारिख में देशर 52तम सीजेआई भाव शपथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ पाठ करेंगे ए सूचना बर्तमान सामना को आसी किंतु हुए तो आउ टिके स्पष्ट सूचना आसव समय गड़वा सहित कारण कहुच्छी से शपथ पाठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ पाठ करेंगे जेहेतु अभिज्ञता रही कारण जो प्रोसेस रही प्रोसेस अनुसार आप जानते प्रथम जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे जो 65 वर्ष है से अवसर लेते परवर्ती समय जस्टिस खाना उत्तराधिकारी भाव में दायित्व तुले बर्तमान सी अवसर नेला बर्तमान जस्टिस गभाई दायित्व तुलेबे स्थान में बर्तमान ना सुपारिश से आगो को सीजेआई भाव दायित्व तुलेबे जस्टिस खाना अवसर ने जस्टिस गभाई किंतु किए बोली आपण मन में प्रश्न आसुव अवश्य अनेक गुड़े ऐतिहासिक राय रे से सामिल होती खंडपीठ जो रहे बेंच जो रहे से सामिल होती किंतु ता भितर गोटे गुरुत्वपूर्ण बेंच रे से सामिल होते नहीं आलोचना करवा किंतु प्रथम आसतु प्रोफाइल पर नजर पकड़ा किए ए जस्टिस गभाई जहाँ ना सुपारिश कर संजीव खन्ना जे वर्तमान दायित्व तुलेबे भारतर सीजेआई भाव में ना होची पूरा ना होची भूषण रामकृष्ण गभाई जी 24 नवेम्बर 1960 महाराष्ट्र अमरावती में जन्मग्रहण करते से नवेम्बर 12 2005 रे हाईकोर्टर स्थायी विचारपति भाव दायित्व तुलाई अर्थात स्थायी भाव से एक्सपीरियंस ग्रहण कर दायित्व तुले और सेबठारु से सुप्रीम कोर्टर अनेक सांविधानिक खंडपीठर अंश अच्छा पूर्व मुझे कहती अनेक ऐतिहासिक राय जो सामना को आसे जो बेंच गुड़िक थाए ता भितर से अनेक बेंच रे रही जेहेतु अभिज्ञता रही तेणु परवर्ती समय आशा अनेक न्यायिक व्यवस्था हुए तो किसी परिवर्तन आसीपे स्ट्राटेजी जहाँ रही से आप्लाय करपारती और बड़ कथा हूँ जो ऐतिहासिक राय कथा मूलर कहती जम्मू काश्मीर राज्य को स्वतंत्र राज्य मान्यता देउथबा जो धारा 370 था जहाँ नहीं बेस बद रही लागू हम बा उच्छेद हम ए सबू भितर जो उच्छेद करने केन्द्र निष्पत्ति था सर्वसम्मति क्रमे समर्थन करवा जो 5 जणिया बेंच थे खंडपीठर सदस्य थे ता भितर जस्टिस गभाई थे अन्यतम तेणु बर्तमान जो दायित्व दी जाऊँगी आशा समस्त आशा करजेतु अनेक गुड़े ऐतिहासिक राय बा बेंच से सामिल थे आउ कि परिवर्तन आसीपे न्यायिक व्यवस्था सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी विश्वजीत दास आम सहित जोड़ी होती श्री दास आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को श्री दास किभली देखते खबर को Well, in fact, mu kohibi as a lawyer, as a practicing lawyer in Supreme Court, I have appeared before him, the next Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, and he is a very kind-hearted, justice-oriented judge. And tankara jo 6 masar almost because 14 तारीख May 2025 से शपथ ग्रहण करिबे by protocol because the existing Honorable Chief Justice he is retiring on 13th of May. So 14 May से जेतेबेले जॉइन करिवे right up to 24th of November, 23rd of November 2025 पर्यंत रहिबे 6 मास. We are really looking up to him as a kind-hearted, justice-oriented judge who perhaps will really take the Honorable Supreme Court to the next level. But the problem is that today every of these Honorable Chief Justices have their job cut out because of the fact that infrastructural problem and the kind of a burdensome judiciary जो मात्रा रे जो backlog गुड़ा को suffer करूची not because I am suggesting for a moment that they should be actually disposed of within a weekend and all. But that's not how the character and the properties of the justice system. But the point is the challenge is so much for the Honorable Supreme Court. And upon जानते हैं आज गोटे हमारा जो work challenge चली Supreme Court रे आज matters ला. Now so much of important politically sensitive issues are coming before Supreme Court as we all know. This is the highest and the last court of India, which is supposed to deal only with the constitutional issues. But unfortunately, because of people like us, we actually burden the court so much with our trivial matters in the Supreme Court
that is actually is a kind of a responsibility of all lawyers, and the Honorable Justice Gawai have also conveyed at several सीधा occasions. साव गोटे कथा that the पचरे lawyers have चाहिए आपण कहले जी सीजे होंती भारत तांका आगे बहुत गुडे चैलेंज थाए ता छडा तांका विजन को मध्य से माने कैरी करंती कि बा ताकू मध्य से माने चेष्टा करंती प्रणोदित करिया पई आईन क्षेत्र रे yes in fact आपण माने जदी मीडिया रे देखुथिबे he actually has come from the जो आपण कहू छु scheduled caste yeru, but I don't want to use that word. But he is the second Honorable Chief Justice of India, where we from that particular community. But point is, he is one of the finest possible judge before us. Even if he is from the scheduled caste community, but he is actually one of the finest possible judge. So therefore, for the community whom he represents, there are ways, there are हमारा जो हमारा Honorable Justice Gawai will have also many people are looking up to him to really bring in the element of your sagacity and magnanimity on the scale of this हमारा जो विविधता रही थी हमारे देश रे जो हमारा different caste creed अच्छी ता भितर जो सामंजस्य आनियार याठू बड़ो एग्जांपल कोन हवा गया बट सर आ गोटे प्रश्न साधारण लोकन मन रे आसे आपण होय त ताको भलो भाबे कहि परिबे जने सीजे को ऊपर चाप मध्य रहे कि सर केंद्र जेतले किछि नियम आने आईन आने सपोज आईनज्ञ जो माने अछंती सीजे चाहु नथुवे ताको से लागू करिया पई किंतु से बर्डनटा रहे कि चाप रहे कि आज्ञा देखंतु after all we are humans, right? We are flesh, blood, and your bones manisha amara madhyare amara own personal prejudice thai pare ama manare personal bias thai pare, but the moment you go to that high chair, you really go beyond it, and that is how the oath of office play a vital role. Yes, people always perceive, people always speculate, people always gossip that okay, perhaps this judge is biased, it's pro government, anti government. Honestly speaking, has inherent elements to tackle these biases and prejudice. That depends upon the party concerned, that depends upon the lawyer concerned. No matter what kind of perception we may have about a judge, honestly speaking, it is our duty and it is our responsibility to carry them. And that is what the transparent institution like judiciary gives us that as a baton. If we do not know how to tackle that, then we will start cribbing everybody under the sun. That's not something that is good for our institutional governance and for our democracy also. Honestly speaking, this honorable judge, we are looking up to him, is the finest judge. I have a lot of expectations from him, and people of India should be also be thankful to the President government to bring him as a chief justice, because that is how they are. निहाती बहुत आशा रही सर आपण जेमती कहते चैलेंज रही जस्टिस गवाई आगे तापर बहुत आशा करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विश्वजीत दास थिले सुप्रीम कोर्ट आईनजीवी संपर्क अधिक आलोचना करले।